After a decade of contentious engagement, during which mutual ties touched one of their lowest points, Pakistan and the US want to revive relations. What will this relationship look like? In the old rentier relationship, especially since the start of the Afghan conflict in 1979, the two countries had become each other's client ally but not friends. Their relationship was not just transactional but contractual, holding each other's compliance to strict scrutiny. That was a recipe for recurring tensions and breach of trust, especially as the fundamental interests of each were held hostage to the other's interests and policy choices. That relationship has been discredited by Pakistan's public as it gave too much power to Washington to manipulate and influence the political dynamics of a dependent country and its needy leadership. In any case, such relationship belonged to the Cold War and America's unipolar moment, and will have no lasting place in the emerging world order marked by America's retreat from the forever wars, rising nationalism globally, unstable power balances, overlapping coalitions, and contested geopolitics. Countries will need choices, and will have them as big powers compete for influence. Only sustainable relations can help Pak-US cooperation. The reality is the US and Pakistan do have interests that are enduring. Their importance fluctuates, but the relationship should not. Washington recognizes that Pakistan is at the confluence of many U.S. interests relating to security concerns, geopolitics and global governance, China, Russia, the Taliban, counterterrorism, non-proliferation, the security of Pakistan's nuclear assets and climate change. And Pakistan has its own interests. Given its economic vulnerabilities, political instability, and the realization that China cannot be the answer to all its challenges, Pakistan feels it must diversify its big power relations. That will also help it realize its full geopolitical potential. Besides, Pakistan may be able to steal some space from the US-India relationship that had worked to its detriment on different issues, including FATF. Both the US and Pakistan have contributed to the emerging shift in ties. But only ties that are sustainable, have public support and are to their mutual benefit can help them achieve their aims. That requires a framework which, due to the multiplicity of U.S. interests, cannot rest on the centrality of India to America's South Asia policy. America's ties with Pakistan must stand on their own, and not be derived from its rivalry with China, relations with India and concerns in Afghanistan. Apparently, this triple dehyphenation is already in the works in Washington. The evolving relationship with Pakistan will primarily focus on the stabilization of Afghanistan, counterterrorism, and regional peace and stability. It will thus require several levels and sectors of cooperation, such as military-to-military ties, intel cooperation, and political relations. Besides, Washington will likely have aid policies that benefit people which, given the pervasive anti-Americanism in Pakistan, have so far focused on steps having practical and PR aspects, like $200 million each for promoting gender equality and flood relief. A Pakistan that is secure and economically and politically stable may be more instrumental to the realization of regional U.S. security aims. Building internal strength and stability should be Pakistan's wish too. The two countries are making serious efforts to strengthen cooperation in trade, investment, agriculture, education, health, green energy, and climate change. The Pak-US Green Alliance could potentially revolutionize Pakistan's farm sector with the help of U.S. expertise in hybrid and weather-resistant seeds, biotechnology, and synthetic engineering. Washington's influence was a significant factor in mobilizing support for Pakistan at the UN-led climate conference in Geneva. And one hopes for sustained U.S. interest in the continued implementation of the Indus Waters Treaty. The U.S. remains Pakistan's largest export destination. Pakistan's exports rose from $7 billion to $9 billion last year, of which IT's share was $1 billion. U.S. technology investors and venture capitalists are investing in Pakistan's startup ecosystem. And nearly 1 million strong Pakistani Americans are gaining political clout and could become an asset to relations. The U.S.-Pakistan relationship would serve many purposes.
But for Washington, the most important could be the one that would use the engagement to ensure that Pakistan's strategic partnership with China and conflicted relationship with India do not undermine its Indo-Pacific strategy. Not all relations are equal, but they can still be important. Ties with China may be indispensable, but with America they are necessary. The writer, a former ambassador, is adjunct professor Georgetown University and visiting senior research fellow National University of Singapore. Published in Dawn, February 2, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. एक दहाई से जारी मुतनाज़ा ताल्लुकात के बाद, जिसके दौरान बाहमी ताल्लुकात अपनी निचली तरीन सतह पर पहुंच गए, पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात को बहाल करना चाहते हैं। ये रिश्ता कैसा नजर आएगा? पुराने ताल्लुकात में, खास तौर पर 1979 में अफगान तनाज़ो के आगाज के बाद से, दोनों ममालिक एक दूसरे के क्लाइंट इत्तेहादी तो बन गए थे लेकिन दोस्त नहीं थे। उनके ताल्लुकात सिर्फ लेन देन नहीं थे बल्कि मुआहदों पर मबनी थे, जो एक दूसरे की तामील को सख्त जांच पड़ताल के लिए रखते थे। ये बार बार तनाव और एतमाद की खिलाफ वर्जी का एक नुस्खा था, खास तौर पर जब हर एक के बुनियादी मुफादात को दूसरे के मुफादात और पॉलिसी के इंतखाब में यरगमाल बनाया गया था। इस ताल्लुकात को पाकिस्तान के अवाम ने बदनाम किया है क्योंकि इसने वाशिंगटन को एक मुनहसिर मुल्क और उसकी ज़रूरतमंद क़यादत की सियासी हरकियात पर असरअंदाज होने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत दी है। बहरहाल, इस तरह के ताल्लुकात सर्द जंग और अमेरिका के यक कुतबी लम्हे से ताल्लुक रखते हैं और उभरते हुए आलमी निज़ाम में उनकी कोई देरपा जगह नहीं होगी, जिसमें अमेरिका की हमेशा की जंगों से पीछे हटना, आलमी सतह पर बढ़ती हुई कौम परस्ती, गैर मुस्तहकम ताकत के तवाज़ुन, एक दूसरे से जुड़े इतिहाद और मुसाबकती जोग्राफियाई सियासत शामिल है। ममालिक को इंतखाब की ज़रूरत होगी और वो उनके पास होंगे क्योंकि बड़ी ताकतें असर और रसूख के लिए मुकाबला करती हैं। सिर्फ पायदार ताल्लुकात ही पाक अमेरिका ताउन में मदद दे सकते हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान के मुफादात पायदार हैं। इनकी अहमियत में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। वाशिंगटन तस्लीम करता है कि पाकिस्तान सलामती के खदशात, जोग्राफियाई सियासत और आलमी गवर्नेंस से मुताल्लिक बहुत से अमरीकी मुफादात के संगम पर है। चीन, रूस, तालिबान, इंसदाद दहशतगर्दी, अदम फैलाव, पाकिस्तान के जोहरी असासों की सलामती और मौसमियाती तब्दीली, और पाकिस्तान के अपने मुफादात हैं। अपनी माशी कमजोरियों, सियासी अदम इस्तेहकाम और इस एहसास के पेश नज़र कि चीन उसके तमाम चैलेंजों का जवाब नहीं बन सकता, पाकिस्तान समझता है कि इसे अपनी बड़ी ताकतों के ताल्लुकात को मुतनव्वे बनाना होगा। इससे इसे अपनी मुकम्मल जोग्राफियाई सियासी सलाहियत का एहसास करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान अमेरिका और भारत के ताल्लुकात से कुछ जगह छीनने में कामयाब हो सकता है, जिसने FATF समेत मुख्तलिफ मामलात पर इसको नुकसान पहुंचाया था। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने ताल्लुकात में उभरती हुई तब्दीली में किरदार अदा किया है, लेकिन सिर्फ ऐसे ताल्लुकात जो पायदार हों, अवामी हिमायत रखते हों और उनके बाहमी फ़ायदे के लिए हों, उन्हें अपने मकासद के हुसूल में मदद मिल सकती है। इसके लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो अमरीकी मुफादात की कसरत की वजह से अमेरिका की जनूबी एशिया की पॉलिसी में हिंदुस्तान की मरकजियत पर मुनहसर नहीं रह सकता। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात अपने तौर पर कायम होने चाहिए, न कि चीन के साथ इसकी दुश्मनी, भारत के साथ ताल्लुकात और अफगानिस्तान के खदशात से अखज़ किए जा। बज़ाहिर इस ट्रिपल-D हाइफिनेशन पर वाशिंगटन में पहले ही काम जारी है। पाकिस्तान के साथ उभरते हुए ताल्लुकात बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर मरकूज होंगे। इस तरह इसके लिए ताउन की मुताद्दिद सतहों और शुबों की ज़रूरत होगी, जैसे फ़ौजी ताल्लुकात, इंटेलिजेंस ताउन और सियासी ताल्लुकात। इसके अलावा वाशिंगटन के पास मुमकिना तौर पर ऐसी इमदादी पॉलिसियां होंगी जिनसे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, जो पाकिस्तान में वसी पैमाने पर फैली हुई अमेरिका मुखालिफ सोच को देखते हुए अब तक अमली और अवामी पहलुओं पर मबनी इक़दामात पर तवज्जो मरकूज कर चुके हैं,
जैसे सिनफी मसावात को फरोग देने और सैलाब से बचाव के लिए $200 मिलियन। एक ऐसा पाकिस्तान जो महफूज, माशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम हो, इलाकाई अमरीकी सलामती के मकासद के हुसूल में ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। दाखिली इस्तेहकाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान की भी ख्वाहिश होनी चाहिए। दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, तालीम, सेहत, ग्रीन एनर्जी और मौसमियाती तब्दीली के शुबों में ताउन को मजबूत बनाने के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। पाक अमरीका ग्रीन अलायंस मुमकिना तौर पर हाइब्रिड और मौसम के खिलाफ मुजाहमत करने वाले बीजों, बायोटेक्नोलॉजी और मसूई इंजीनियरिंग में अमरीकी महारत की मदद से पाकिस्तान के ज़री शोबे में इनकलाब बर्पा कर सकता है। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़ियादत मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए हिमायत हासिल करने में वाशिंगटन का असर और रसूख एक अहम उनसर था, और उम्मीद है कि सिंध तास मुआहदे पर मुसलसल अमल दरामद में अमरीका की मुस्तकिल दिलचस्पी बरकरार रहेगी। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा बरामदी मकाम है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की बरामदात $7 अरब से बढ़कर $9 अरब तक पहुंच गई, जिसमें आईटी का हिस्सा $1 अरब था। अमरीकी टेक्नोलॉजी सरमायाकार और वेंचर सरमायाकार पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में सरमायाकारी कर रहे हैं, और तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी नजाद अमरीकी सियासी असर और रसूख हासिल कर रहे हैं और ताल्लुकात के लिए एक असासा बन सकते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात से बहुत से मकासद हासिल होंगे, लेकिन वाशिंगटन के लिए सबसे अहम वो हो सकता है जो इस बात को यकीनी बनाए कि चीन के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और भारत के साथ मुतज़ाद ताल्लुकात इसकी बहरे हिंद और बहरुल काहिल की हिकमत अमली को कमज़ोर न करे। तमाम ताल्लुकात बराबर नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी अहम हो सकते हैं। चीन के साथ ताल्लुकात नागुज़ीर हो सकते हैं, लेकिन अमरीका के साथ वो ज़रूरी है। मज़मून निगार साबिक़ सफ़ीर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के विजिटिंग सीनियर रिसर्च फेलो हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 2 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.